Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone. I welcome you all in my YouTube channel Exploring the Concepts, and my today's topic is from 10th Biology. Coordination and control is my today's chapter number 12. Well, our ongoing topic is endocrine gland system. So let's start our today's lecture from the quick review. I'm hoping that you are all well at home, safe and secure, and preparing for your exams these days. So go through these lectures once. This would be helpful to for you all, inshallah. So my first question is, name the secretions of posterior pituitary gland. So now who is going to tell me? Obviously me. So the posterior pituitary gland is secretions are the oxytocin and vasopressin are the two hormones which are produced from the posterior pituitary gland. And which hormone is needed for the activation of thyroid gland? And that is thyroid gland, thyroid stimulating hormone. And then is differentiation between hypothyroidism and hyperthyroidism, and you need to differentiate from between the two. And if you have found any difficulty, you can go to the lecture and then identify the differences between the two. And then draw a concept map for calcitonin. So you need to draw a concept map as I have drawn in my last lecture for vasopressin, and you need to draw for calcitonin when it has to release and when it has to going to be stopped. So you need to write the signals in the form of a flowchart. And then what is another name for vasopressin? Another name for vasopressin is ADH, antidiuretic hormone. So if you found any difficulty in answering these questions, so I have told you the answers as well. Still found, if you found any difficulty in answering these questions, you can ask me, you can write me in the comments, and I'll reply you. And then my today's topic is parathyroid gland. So be attentive everyone, listen to me carefully. सारी नोटी हरकतें छोड़ दें और थोड़ी देर के लिए लेक्चर ज़रा ध्यान से सुने. So पैराथायरॉयड ग्लैंड है जनाब. पैराथायरॉयड ग्लैंड आपको ये नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे चार balls है ना. So we can see these four balls in the, what is that pink structure, by the way? That pink structure, let me take the pointer first. Yeah, thank you. So the spike structure is actually the thyroid gland. So who is going to tell me the location for the thyroid? Yeah, that's it is. Its location is below the larynx and on the trachea, right? Windpipe के ऊपर ये present था, right below the larynx. So that is called as what thyroid gland is. And on the back end यानी कि जहाँ पे ये back neck को, sorry, back thyroid को cover करता है, तो उस end पर there are four different glands are present of the same nature, and these are called as, so two pairs. Parathyroid glands are available in two pairs, and these are called as small glands, endocrine gland system, and they are going to regulate body calcium. And we have discussed another hormone which are concerned with the calcium, and that is calcitonin. Okay, so parathyroid gland, हमने देख लिया, it is located in the neck once again, but on the back neck and embedded in the thyroid. Thyroid में embedded है, ठीक है? Okay, then is, now look at this diagram. This is the front view of the thyroid gland. This is the larynx, and right below the larynx there we have the thyroid. And look at this. This is the back end, right? ये हमारी back neck से जो thyroid के back side से dorsal views जो है हमारे thyroid, sorry, इसका dorsal view of our windpipe trachea. तो ये आपको नजर आ रही है back end से, ये thyroid पीछे यानी कि front से कवर करता है और पीछे को एंड हो जाता है ना, थायराइड चिपका हुआ है हमारी ट्रेकिया से. सो द बैक एंड यू कैन सी द फोर स्मॉल होल्स, a ball like structure for some dots like structures, and these four structures are basically the parathyroid which are embedded in thyroid. So you can say these are actually the part of the thyroid, ठीक है ना, जो कि parathyroid gland, इसीलिए इसका नाम रखा गया. So location इसकी यहाँ given है हमें, and location is parathyroid glands are located in the neck behind the thyroid, where they continuously monitor and regulate the blood calcium level. Okay, then secretions. So the secretions of the parathyroid gland, agar koi gland hai, so obviously it has some secretions as well, and the secretions for the parathyroid is parathormone. So these flow charts and these, the such diagrams are very, very helpful in keeping the things in mind and revising the concept, So these are basically your handouts. So draw in your notebooks, in your books, all the flowcharts. Try to make the flowcharts for all of the topics, all of the concepts.
Okay, let's start with the parathyroid gland. What it do, by the way? So, parathyroid gland, as it is concerned with the calcium level of the blood, so it is going to regulate the calcium level, right? So, in regulating, it has to maintain. Yani ki there is a set point for a calcium level as well, like the glucose, like the temperature. So, our body is working in homeostasis, and the diversion from the homeostasis is called as a disease. याद रखिएगा ये बात. अगर आप divert कर जाते हो homeostasis से, तो it would result in a disease. So low calcium level is would be the signal for the release of parathormone. Low calcium level. Now, what was the signal for the calcitonin to be released? And the signal for the calcitonin is high calcium level, right? High from the set point. Set point से ज़्यादा है, so calcitonin will be released. While अगर set point से कम है, then parathormone, parathyroid gland would be active, and parathormone, release of parathormone would be taken place. ठीक हो गया ना? सो सारा पैराथॉर्मोन हार्मोन हमारा रिलीज हो जाएगा. एंड व्हाट इट विल डू, करेगा क्या ये भला? अब इसके दो बेसिकली दो तीन काम करेगा. सबसे पहले तो उसने ब्लड कैल्शियम लेवल को नॉर्मल पे लेके आना है ना. लो हो गई है, राइट? कि कब रिलीज होता है? जब ब्लड कैल्शियम लेवल लो हो जाती है, ठीक है. और इसने उसको नॉर्मल पे लेके आना है. नॉर्मल पे लाने के लिए पैराथॉर्मोन आ जाएगा. पैराथॉर्मोन ने करना क्या है कि अब आपको पता है कि कैल्सिटोनिन ने ब्लड से उठा के कैल्शियम इट डिपॉजिट्स इनटू द बोन्स. ऐसे ही हुआ था ना, बोन्स में जाके डिपॉजिट कर आया. लेकिन पैराथॉर्मोन क्या करेगा? बोन से कहेगा चलें जी वापस करें, तो हमें ज़रूरत है अब, तो वही जाके बोन से ले आएगा. ये बाय हुक और बाय क्रुक आपकी ब्लड की कैल्शियम लेवल मेंटेन करके देगा. आपको दूध से बदबू आती है, अंडा आपसे खाया नहीं जा रहा, फ्रूट आपको पसंद नहीं है, तो इससे क्या होता है? इस तरह की हम जब हरकतें करते हैं तो ये हमारे अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है. सो बाय हैविंग दिस सच काइंड ऑफ डेफिशिएंसी लीडिंग टू द ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रॉब्लम तो हमें क्रिएट होगा ना, बिकॉज वी आर डाइवर्टिंग फ्रॉम द होम्योस्टेसिस. तो क्या होता है कि आप लंबे अर्से तक आपने कैल्शियम नहीं ली, आप डाइटिंग पे चले गए, आपने किसी की नहीं सुनी. सो क्या होता है इससे? आपका ब्लड का मिनरल लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब हो जाता है. तो फिर क्या होता है कि आप ये लेके आ रहा है, आपने अपने कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी भी जाना है, डाइटिंग भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे, बस चीज़ें पूरी नहीं ले रहे, तो क्या होगा? कमी आ जाएगी ना. तो वो जो कमी हुई है, तो अब वो आप एक्टिविटीज़ तो नहीं छोड़ी ना, आपने खाना छोड़ दिया, पर एक्टिविटी तो नहीं छोड़ी. तो अब आपके मसल्स की मूवमेंट के लिए कैल्शियम चाहिए, आपकी नर्व्स की मूवमेंट के लिए कैल्शियम चाहिए, न्यूरॉन्स में मैसेजेस ट्रैवल करने के लिए कैल्शियम चाहिए. कैल्शियम तो है ही नहीं, क्योंकि आप खा ही नहीं रहे हो. तो पैराथॉर्मोन तो बर्दाश्त नहीं कर सक रहा वो कमी, वो जाके बोन से ले आएगा. हाँ, दूसरा एक वो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज भेजेगा किडनीज को. इट विल सेंड मैसेज टू द किडनीज, इट विल सेंड मैसेज टू द इंटेस्टाइन कि भाई आप लोगों ने प्लीज, यू आर नॉट अलाउड टू वेस्ट अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम. सारा कैल्शियम रीअब्जॉर्ब करें आप. तो ये सारा कैल्शियम रीअब्जॉर्ब करेंगी, ताकि कैल्शियम यूरिन में और फीसिस के थ्रू वेस्ट ना हो. सो अगर आपको याद आ रहा है तो कैल्सिटोनिन में इसका रिवर्स था. बिकॉज ऑफ द हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, कैल्सिटोनिन विल सेंड मैसेजेस टू द किडनीज एंड द इंटेस्टाइन टू नॉट टू absorb the calcium from the urine and the feces. ठीक हो गया. सो पैराथॉर्मोन का क्या फंक्शन है? लो कैल्शियम पे रिलीज होगा. पैराथॉर्मोन हार्मोन इसकी सिक्रीशन का नाम है. एंड इट विल बैलेंस द ब्लड कैल्शियम लेवल टू द सेट पॉइंट बाय रिट्रीविंग द कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स. एंड ऑब्वियसली जो भी बोन से जब ब्लड में कैल्शियम आएगी, तो उसको जाने नहीं देना, तो मैसेज इज सेंट टू द किडनीज एंड द इंटेस्टाइन एज वेल. दिस इज द फंक्शन, बाय द वे. दिस इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ द पैराथॉर्मोन. Now let's have a very important discuss a very important concept, the antagonism of the parathormone and calcitonin. दोनों हार्मोन एक दूसरे की जिद है, ठीक है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. Now look at that yellow box. It guides you that blood calcium level regulation, right? In case of low blood calcium level, जब भी blood calcium low होता है, या हाई से शुरू करते हैं, वन यहाँ लिखा हुआ है ना, जब भी ब्लड कैल्शियम लेवल हाई होगा ना, सो इफ द कैल्शियम लेवल्स इन द ब्लड राइज अबव अ सेट पॉइंट एक है, उससे ज़्यादा हो गया, राइट? सो थायराइड ग्लैंड इज गोइंग टू रिलीज कैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन क्या करेगा? इट विल falls try to lower the calcium level of the blood by depositing the calcium in the bones, or by releasing it from the intestine and from the किडनीज. ठीक हो गया. ये उसने क्या किया? कैल्शियम लेवल को डाउन करने की कोशिश की. Now, what will happen in case of low calcium in the blood? So it will result in the calcium यानी set point से कम हो गया ना. So in case of this situation, parathormone hormone will release from the parathyroid gland, and parathyroid gland will try to rise up the calcium level
in the blood, rise of the calcium level means keeping it at the set point, right? Try to take it to the set point of the calcium level. And for this, what it will do, it will retrieve the calciums from the bones, and it will send messages to the kidneys and the intestine for the reabsorption of the calcium ions, जिनके वो कहेगा आपने बिल्कुल भी कैल्शियम ज़ाया नहीं करनी. Now, what will happen in the abnormal secretions of parathormone? सो अब आप ये खुद सोचें कि अगर आप ये सोचें कि पैराथॉर्मोन की कमी हो जाती है, इफ देयर इज़ नो पैराथॉर्मोन इन द ब्लड बॉडी, सो इन केस ऑफ लो कैल्शियम इन द ब्लड, अगर आपके ब्लड में लो कैल्शियम हो गया और पैराथॉर्मोन भी नहीं है, तो क्या होगा कि आपका कैल्शियम कम होता चला जाएगा, आपके मसल्स में पेन होगी, आपके मसल्स और न्यूरॉन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे, राइट. तो अब आपने खुद से सोचना है कि यार क्या होगा, क्योंकि आपको फंक्शनिंग जब पता चल जाती है ना, देन यू विल डू इट ऑन योर ओन. तो क्वेश्चंस आप अब आप पेपर के वक्त आप हर चीज़ याद करके रिवाइज कर पाओगे, दिस इज़ नॉट नेसेसरीली इंपॉर्टेंट. तो अपने कॉन्सेप्ट पे फाइट करो, ठीक है ना, उसको अंडरस्टैंड करो, हर बात पता होनी चाहिए आपको. ओके. देन व्हाट विल हैपन इन द एबनॉर्मल सिक्रेशंस ऑफ पैराथॉर्मोन, अगर अगर तो ब्लड कैल्शियम लेवल लो हो गया और पैराथॉर्मोन ने आना है, ठीक हो गया, बट ओवर सिक्रेशन हो गई, ओवर सिक्रेशन आ रही है, एबनॉर्मल ज़्यादा सिक्रेशन अगर हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, आप या खुद बताओ. जब वो नॉर्मल सिक्रीट करता है तो उसकी ड्यूटी है टू ब्रिंग द कैल्शियम्स फ्रॉम द बोन्स, ठीक है ना. वो बोन से जब वो ज़्यादा आ रहा है तो क्या करेगा, वो ज़्यादा बोन्स में से कैल्शियम ले आएगा. एंड व्हाट विल इट विल डू, इससे क्या होगा, इससे आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, ठीक है ना, ऑस्टियोपोरोसिस. और चूंकि ना किडनी को इजाज़त है, क्योंकि पैराथॉर्मोन आ रहा है, ना किडनी को इजाज़त है कैल्शियम रिलीज करने की, ना इंटेस्टाइन को, सो बॉडी में कैल्शियम एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगी एंड रिजल्टिंग इन किडनी स्टोन्स, राइट. सो जो कैल्शियम ऑक्सलेट से स्टोन्स बनते हैं हमारे, वो किडनी स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे. हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है ना, कैल्शियम की अमाउंट आपको हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द किडनी स्टोन्स एंड द ऑस्टियोपोरोसिस. द सिंगल मेजर डिजीज ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड इज ओवर एक्टिविटी ऑफ वन और मोर of the thyroid lobes, which make too much parathyroid hormone, causing a potentially serious calcium imbalance. Number one, leading to hypercalcemia, kidney stones, and osteoporosis. तो ये सारी situations हमारी body में create हो जाएंगी by abnormal secretions of parathormone. My next hormone is adrenal gland, and I'm hoping that you have clear from all sides from the parathormone. Okay, good. So start करते हैं adrenal gland. And my adrenal gland is also called as emergency gland. So it's a gift to all of us. Although everything is a gift, by the way, मगर हमें आदत नहीं है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की. हम बस हमारे पास जो एक चीज़ नहीं होती ना, हम उसको रोते रहते हैं. जो इतनी चीज़ें हैं, हमने कभी उनका शुक्र अदा नहीं किया अल्लाह का. So stop everyone, stop listening and first of all say Alhamdulillah, ताकि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें कि अल्लाह ने हमें इतनी खूबसूरत चीज़ों से नवाजा. Now look at this diagram. एक बड़ी बहुत ही अच्छी diagram है ये. Okay, ये आपको नजर आ रही है कि vertebral column that is going to show you the location of your kidneys as well, and this is left one little lower while right one a little higher. और जी ये जो है आपकी किडनीज के ऊपर, किडनीज ने कैप पहनी हुई है, राइट. दैट कैप इज बेसिकली, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर पर आपको नजर आ रहा है, ये दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है. ये एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ हार्मोन्स, ठीक हो गया, बहुत सारे हार्मोन्स क्रिएट करने हैं इसने. Adrenal gland, they are found above the kidneys. एक तो अपने लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है. They are present on the kidney like cap of the kidneys, and then each gland has two parts. हम next figure में देखते हैं. Location and structure of adrenal gland. Now this is the location. You can see that yellowish structure present on the kidney, and that is basically the adrenal gland. Now look at another diagram. This is going to show you the structure of adrenal gland, right? It is something like this. There is the outer region and an inner region. Outer region is lighter like the kidney, it is called as cortex, and inner region is a little bit darker, and that is what called as medulla. Same is the case, the two parts in the kidneys as well, right? Adrenal cortex and adrenal medulla, ठीक है ना, इसमें भी वो दोनों चीजें हमें नजर आ गई. Now, adrenal gland secretions. Adrenal medulla inner part आपको नज़र आया था, और इसने fight and flight response शो करना है, और इसके हार्मोन्स हैं एपिनेफ्रिन. अब हम देखते हैं ये आ गया एड्रिनल ग्लैंड. इस फिगर पे आप आओ,
That region is adrenal cortex and that region is adrenal medulla. इंटरेस्टिंगली कि ये हार्मोन सारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। हमें तो पता नहीं होता ना, हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है, हम गुस्से में आ जाते हैं, मारना पीटना शुरू कर देते हैं। हमें तो नहीं पता चलता कि अब हम जब गुस्से में आए तो हमारा सांस फूलना चाहिए, हमारे हाथों को ज़्यादा एनर्जी मिले, हम घूंसे मारें, या जैसे मैं हूँ भाई, भाग, जहाँ लड़ाई वाली सिचुएशन शुरू हुई भाग जाओ, तो मेरी लेग्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो उस टाइम पे डाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल सीज हो जाता है और हमारे बॉडी पार्ट्स जो भी इन्वॉल्व हैं उस सिचुएशन में उनको ब्लड सप्लाई हो जाती है। ठीक है ना? जब भी हमारी बॉडी किसी स्ट्रेस में आएगी, एड्रिनल ग्लैंड विल बिकम एक्टिव। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इमरजेंसी ग्लैंड। आपने नोटिस किया ना, मूवीज में देखते हैं, ड्रामास में देखते हैं कि कोई खातून है, उनके बेटे की डेथ हो गई है तो साथ उनकी भी डेथ हो जाती है, एकदम ही वो इतना स्ट्रेस ले लेती हैं कि उनकी डेथ हो जाती है। बट दिस इज नॉट द रियलिटी है। हाँ, ऐसा होता भी है, ऑब्वियसली एक्सेप्शंस होती हैं, इस तरह हो भी जाता है, पर ज़्यादातर इस तरह नहीं होता। किसी मरने वाले के साथ बाकी घर वाले नहीं मर जाते हैं ना। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें इक्विप्ड किया हुआ है, हमें अल्लाह ताला ने एक हार्मोन प्रोवाइड किया हुआ है जो हमें बचा के रखता है, जो हमें सिचुएशंस, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन से कोप अप करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। दैट व्हाट इज कॉल्ड एज एड्रिनल ग्लैंड एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इमरजेंसी ग्लैंड। फाइट और फ्लाइट ग्लैंड जो हमें हेल्प करता है इन सारी सिचुएशंस को डील करने के लिए। आपको बहुत डर लग रहा है, आप बहुत खुश हैं, आप बहुत बीमार हैं, आप लड़ाई कर रहे हैं, सो ये सब करने के लिए आपकी बॉडी अंडर स्ट्रेस चलिए, बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है, ये सारे बॉडी के स्ट्रेसेस हैं। हम देखते हैं सर्दी गर्मियों में बाहर से आते हैं मुंह लाल हुआ हुआ होता है, सर्दियों में बाहर से आते हैं मुंह पीला हुआ, सॉरी, ब्लू हो जाता है ना। नेल्स हमने नोटिस किया, अपने में कभी ठंडे पानी से वजू किया, नोटिस किया आपके नेल्स ब्लू हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ योर ऑटोनॉमिकली कंट्रोल्ड बॉडी। आपकी एरियल पार्ट्स को ब्लड सप्लाई रोक दी जाती है ताकि हीट कंजर्व हो जाए बॉडी में, और इनर बॉडी पार्ट जो आपका ट्रंक रीजन है उसका टेम्परेचर डाउन ना हो। सो लेट्स सी व्हाट एड्रिनल ग्लैंड इज गोइंग टू डू विद अस। So adrenal gland has two parts, adrenal cortex and adrenal medulla. I already have told you about these two terms, adrenal cortex and adrenal medulla. And then adrenal cortex is going to secrete some hormones which are called as corticosteroids, and corticosteroids are the hormone produced by adrenal cortex. Then epinephrine is the name of the hormone which is produced from adrenal medulla, adrenal medulla, right? So medullary region is concerned with the emergency, and corticosteroid region is concerned with the balance of the salts and yeah. Cortex, outer part of an adrenal medulla, controls the hormones that controls water and salt balance. Main hormone secreted by adrenal cortex is corticosteroid. It controls the amount of water and salt in our body. आपने पढ़ा था ना कि एडीएच नेफ्रॉन में से वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है जब बॉडी में वाटर की कमी होती है, तो उसके साथ साथ कोई सॉल्ट भी इन्वॉल्व होता है ताकि ज़्यादा सॉल्ट, ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब किया जा सके। सो जो सॉल्ट बैलेंस करने वाला हार्मोन होता है, एक उसका नाम है एल्डोस्टेरोन फॉर एग्जांपल, वो हमारे सोडियम्स को पिक करता है। ओके जी, सो दैट वाज द एंड ऑफ द टॉपिक। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो मैंने 10th क्लास के लिए छोटा मोटा सा इसका एक्सप्लेन करती हूँ, ज़्यादा बातें नहीं की इसके अंदर। आई मीन कि थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ही गिवन है किताब में। सो बट इफ़ यू फाउंड एनी डिफिकल्टी तो मुझे ज़रूर बताना। एड्रीनल ग्लैंड इज कॉल्ड एज द एमरजेंसी ग्लैंड, और वो हमारी बॉडी का इमरजेंसी सिचुएशंस में हमें ज़िंदा रखे हुए है कि हम किसी भी स्ट्रेस को कोप अप कर जाते हैं। ठीक है ना? और हम तो है भी मुसलमान, तो हमें तो थोड़ा सा अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जो भी हमारे साथ अच्छाई या बुराई होती है वो अल्लाह की तरफ से है। तो हम इसलिए भी हमारा एड्रीनल ग्लैंड थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज वी नो वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। और हम चाहते हैं, हमें हम कहते थे कि यहाँ नहीं तो चलो अल्लाह ताला हमें वहाँ अता करेंगे। तो अल्लाह ने हमें सुकून अता किया हुआ है, हम बेबस और बिल्लाचार नहीं हो जाते बिल्कुल। सो सो दिस इज अनदर अ वेरी गुड फीचर टू अस। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो कॉर्टिकल ग्लैंड है वो कंट्रोल करता है वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में पानी, और जब आप ज़्यादा नमक खा लेते हो आपको पानी पीने का मैसेज मिल जाता है, तो ये भी इसी की कार्रवाई है। और आपने कम पानी पिया हुआ है तो ये आपको स्क्वेंटी यूरिन पास करने के लिए जो बॉडी को प्रिपेयर करता है वो भी इसी का काम है। सो दैट वाज द टू hormones we have discussed in our today's lecture. One is the the parathormone, another is adrenal gland. So that's the end of the lecture.
If you have any question you can write me. آپ لوگ کوئی کوشچن نہیں پوچھتے یا تو میں سمجھ جاؤں کہ زبردست سمجھ آ گیا ہے اس لیے آپ کوئی کوشچن نہیں پوچھ رہے تو چلو ٹھیک ہے. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی کچھ سمجھ نہیں آیا تو پھر کوشچن نہیں کر رہے. تو بالکل بیٹے ایسا نہ کریں پلیز. واچ دا ویڈیوز اپ ٹو دا اینڈ تاکہ آپ کو ساری بات پوری طرح سے سمجھ آئے اینڈ دین آسک دا کوشچنس. اینڈ آل دا بیسٹ فرام مائی سائڈ. I, Ma'am Shazia is going to signing off. So we will meet again in the next lecture. Up till then اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.